So this is what you need to focus on. Logical reasoning, it's a good section. So among the three sections, if I say that this one, your maths, your logical reasoning, and your VA, the most scoring section is this one, logical reasoning. Logical reasoning has been easiest among all three sections always. But if you are not doing anything over here, still then you won't get through. So basically your job is to maximize your score here. So getting 20 marks or 18 marks from here is not going to be a big deal. So getting I would say getting 20 marks or 15 marks from logical reasoning section is easy. But still, our job is to reach 66. So from where you are going to get remaining marks, that's going to be verbal, then there is going to be one. So basically, maths is going to be important. You need to solve at least 13, 14 questions, right? Unfortunately, after 2021, they have increased the difficulty level of maths. So, excuse me. So that has become a little bit of pain. If you see, a lot of people are unable to qualify CSAT just because of maths part. Because maths has always been maths after before 2021 it was still doable, but after 2021 they have made a lot of changes in maths, and you are going to see a variety of tricky questions in maths. So they check the holistic overview of maths, that you need to understand more or less every concept of maths. Basics should be very clear, otherwise you will not be able to clear your maths exam. Now, the difficulty level you see. 25, if you see, in maths, there were only 7 easy questions, and that's very unfortunate. If you see, after 2021, the easy questions are consistently decreasing. So, let me see. 2021, there were 15 easy questions. 2022, there were 13 easy questions. 2023, there are 8 easy questions. 2024, 7. 2025, 7. So if you see, number of easy questions are consistently decreasing, right? Number of moderate questions are more or less same. Here in 2021, they were 9, then 16. And after that, you see 16, 21, 18, and 15, right? Difficult questions are also decreasing. Basically, if you see it is 14, then it is 13, it is 12. So more or less these values are constant. So the most of the paper is going to be made of moderate questions and difficult questions in maths. Now, this is the tricky area, because if you are getting a moderate questions or a difficult questions, so difficult question is something that these are those questions that you need to avoid. I won't be solving these questions in CSAT. Right. Now, moderate question is a question that judges your basics of maths. You need to understand what is LCM, what is HCF, what is ratio, what is percentage, and how those things work. What is simple interest, what is profit, and what are your numbers? Numbers are even, odd, prime. So all those concepts you need to be very clear of. Otherwise, you will not be able to clear the cutoff of basic minimum cutoff of I would say maths, right? So this is something that is very important, very important. So moderate questions are questions on which you need to focus on. Logical reasoning, if you see, there are more or less constant number of easy questions. So 2021, there were maximum number of easy questions that were 9. And after that, they have become more or less constant. 4, 5 easy questions. Now 8, this year there were total number of logical reasoning questions itself were very less. So 8, 8, 8. So moderate questions can also be done in logical reasoning, because logical reasoning questions, if you are very comfortable, right? If you have practiced reasonably, you are spending half an hour or 40 minutes in logical reasoning, then you are easily going to get
out of these 6 you can get easily get 5 questions right. Out of this you can easily get 4 or 5 questions right. So 9 questions right means 9 into 2 is 18. 18, 19 marks, 20 marks. Getting 20 marks from this section is not going to be difficult. You can easily get your score 20, 22 marks from this section easily. There would not be any problem. I hope I'm clear on this. So out of 66 marks, getting 15 to 20 marks from logical reasoning section is not a tough task. Getting 25 marks from QA section, 25, 30 marks from QA section will not be a tough task. And getting 25 marks from VA section will not be a tough task. So basically, if you are scoring 17, 18 questions from logical reasoning, somewhere around 25 to 30 questions, 30 marks from maths, and 25 to 30 marks from VA, and that's it. You have cleared the cutoff. There is no sectional cutoff. So basically, you can maximize your score in one section, and then you can just easily solve it. Easily, you can clear that. Right. Now, this one. Since 2022, UPSC has raised the difficulty level of CSAT, and 2025 was a difficult paper. Trust me on this. It was difficult paper. When I was solving the paper, I realized it was not an easy one. It was tricky, it was difficult, but still, I would say getting 70, 75 marks or 80 marks will not be a tough task in CSAT. It can easily be done. And as well as you can also say it is one of the toughest papers I have seen in UPSC. I won't say this statement is written in the recent years, but I would say not in recent years, even in past years, 2015, 2016, 2018. I haven't seen that difficult of the paper. So it was like maths was a little bit demoralizing in this one. So I would say that you should focus on this so that clearing the cutoff becomes easy. Okay. Now, as I said, that it's a silent killer. Despite your hard efforts, you are going to work very hard on paper one. You are going to work very hard in your subjects. You are going to work very hard on your GS. But still, if you are unable to clear the cutoff of CSAT, you are not going anywhere. This year itself, I have met a couple of people who have scored very high in GS, but unfortunately, they scored 64 marks. One guy scored 64, one guy scored 61 in CSAT, and they were very heartbroken because I have seen them working. They worked uh, way too hard for this one. But I've been telling them that you need to focus on CSAT as well. CSAT, work a little bit on CSAT. पढ़ लो थोड़ा CSAT पे कि भैया CSAT qualifying है. And the attitude was like getting 66 marks is not going to be a tough task. And both of them, so if they would have got somewhere around 50 marks or 30 marks in CSAT, they wouldn't be that heartbroken because they were extremely heartbroken because they were on the edge. Out of 66, one guy got 64, one guy got 61, and that's you are sitting on a edge. GS is cleared. CSAT just eliminated them. So इतना एक बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई CSAT पे भी थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा. Otherwise, it's just eliminating people. It's not adding any huge value, but it is eliminating. Getting 100 marks is not giving you an edge, but getting 64 marks is eliminating you from the race itself. And the worst part of CSAT is your UPSC, that it is conducted only once a year. So if you screw up in CSAT, 1 year is wasted. Remember this. It's not just 66 or 64 marks. Remember this. It's 1 year that is on the stake. कि मतलब पूरा आपने सब पढ़ लिया, आपका सब तैयारी अच्छी है, सी सेट की वजह से पूरा साल चला जाता है. एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ ईयर.
और सीसैट की वजह से अगर साल जाएगा, सो इसका मतलब दैट इज, इससे ज्यादा डिमोरलाइजिंग कुछ नहीं हो सकता। आई होप आई मेक सेंस अ लिटिल बिट। Now, this is the distribution of your questions in maths. If you see, the percentage has always been there. Ratio proportion, this year we didn't have a question, but generally there is a question on ratio proportion. Profit and loss, last year there were two questions, but this year there wasn't any question. Simple interest, compound interest doesn't have a lot of weightage. Data interpretation, again, it doesn't have a lot of weightage. Ages and partnership, more or less one question is going to be there. Time and work, more or less one question is going to be there. PSD, last to last year, they didn't ask any question, but generally it is there in the paper. Types and systems, they rarely ask. Boards and stream, they rarely ask. Probabilities, again, they ask very rarely. But if you see, the highest weightage they are giving, the highest weightage they are giving to number system. Every year, if you see, the highest weightage has always been given to number system. LCM, SCF is always there. This year there was no series, but still, if you see, in the previous year there was at least one or two questions of number series were there. So basically, if you focus on these three things itself and a little bit of percentage, you are going to be good to know. ये तीन चीजें, इस पे फोकस होना चाहिए. I hope I make sense. Clear? Now, let's talk about uh, quantitative reasoning. So, reasoning is alphanumeric series is always going to be there. Coding, decoding is always going to be there. Then blood relation, more or less, it's going to be there only. Sitting arrangement is more or less it is going to be there, and analytical reasoning is also going to be there. More or less. Okay. So, cuboid, counting figure. So basically, all those things are going to be there in the exam. And this continuous letter series, alphanumeric series, coding, decoding, blood relation, and setting arrangement. So basically, these type of questions I have seen over the period of time. Anyone who gets this question, you have, and this one direction says. So anyone who gets these questions, this one, this one, this one, this one, this one, and this one, people tend to get it right. If you practice a little bit, you are going to get it right of these questions. So out of 8, 9, 10 questions, at least 7 to 8 are you are able to solve. And I am saying in the actual exam, I'm saying that at least 8 questions you will be able to solve out of these questions. And these 8 questions are going to give you at least 20 marks. So even ranking and order is extremely easy. Syllogism is extremely easy. Clock is also easy. So basically, whenever you are going to see these kind of questions, you are going to get 20 marks from reasoning itself. You don't have to worry much about it. Easy 20 marks are there from the reasoning section. Okay. Now, the common mistakes that anyone has, common perceptions that people have in CSAT, that it's qualifying nature, right? Either people don't spend uh, even a little time in CSAT, or they spend all the time on CSAT, right? And both are wrong. I would say that it's a qualifying. Your job is to get uh, a little more than 66 marks. You are not supposed to score 100 marks, 120 marks, 140. No, you are supposed to score 66, 70, 80 marks. More than 80 number to bahut hi, right? And this, remember this, it is a competitive exam. So it's any competitive exam is not a last moment paper. This is not your class 12th board. This is not your graduation के एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ लिया हो गया. It doesn't happen, right? This CSAT needs consistency, right? And if you are sitting and thinking कि एक सेक्शन नहीं करेंगे बाकी अब इस सेक्शन से स्कोर आ जाएगा, नहीं आएगा.
You need to score some score in QA, you need to have some score in BA, you need to have some score in LR, and overall you are going to get 66 marks. लेकिन एक सेक्शन छोड़ के 66 तो नहीं है. So basically neglecting one session is going to be a huge no. So वो तो नहीं करना है. And spending too much time on one section because you think you are good at one section and you are going to score all the marks in that section, no, that won't do again. So तीनों सेक्शन पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना. आई वुड से एटलीस्ट हाफ एन आवर इन ईच सेक्शन. हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, देन रिमेनिंग हाफ एन आवर यू कैन स्पेंड डिस्ट्रीब्यूट इन एनी वे. एंड ओवरऑल मतलब एक ही सेक्शन पे 2 घंटे नहीं देना, एक ही सेक्शन पे 1.5 आवर्स नहीं देना. ठीक है. सो तीनों सेक्शन पे हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर तो देना ही है. उसके बाद अपन देखेंगे कि रिमेनिंग हाफ एन आवर हाउ यू आर गोइंग टू यूज. राइट. सो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग सो फार? None. So basically, these are PYQs are necessary to do. Concepts are not the concepts are the key. They are not shortcuts. There are no shortcuts in CSAT. Comprehensive coverage is necessary because exam is unpredictable. Previous year questions are must do. Test series is going to help you keep on track. ठीक है. And take guidance. The important part is anyone who has doubt, they don't ask. So I would say ask. Whenever you feel like you need some help, ask. Ask the doubts, ask the questions, ask some issues. You are unable to solve questions of some particular topic. Then ask what you should do, how you should prepare, what kind of questions you should start with. So basically, whenever you have any doubt, ask. And that's the most important thing that you must do. And again, this is the best part that I like. That is this one, that regular practices that you must do. Okay. So this is exam strategy. Attempt is 40%, 80% accuracy, 32 correct, 8 incorrect. Still then you are good to go. And that's what we are supposed to do. And this is the number of questions that we need to attempt. Okay. Now we are going to talk about a maths a little bit. Now just check the thought process. I'm just going to check your thought process. कि मतलब क्या है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है. So let me share. This is something that we are going to talk about, classification. Acha. Now I hope everyone will be responsive. Okay. So first of all, I am giving you a number, let's say 2. What you are going to think of? दिमाग में पहली चीज क्या आ रही? When I say a number 2, what is the first thing that you are going to think of? Even prime, very nice, Virat. It's an even number, very nice. It's an even number, natural number. So basically, when I am going to say 2, I am going to think it's an even number, it's a natural number, it's the smallest even number. Below 2, there can't be any even number. Right. Now, so remember this. It's prime, it's even. Make sense? Now, I'm going to talk about, let's say, numbers. Okay. How many type of numbers we have? So there are going to be 2 types. One is real, second is imaginary. We are never going to talk about imaginary numbers because they are not in the syllabus. Okay. So we are talking about real numbers. Ab real numbers kya hai? What are real numbers? So real numbers can be categorized into 2 categories. One is irrational numbers. Second is rational numbers. Right. Now, rational numbers kya hai?
any number that can be represented in the format of P by Q, where Q is not zero. Irrational numbers क्या है? That cannot be represented in the format of P by Q. ठीक. Now, it can be said as root 3, root 5. Is root 4 a rational number or irrational number? Is root 4 a rational number or irrational number? It's not an irrational number. It's a rational number because square root of 4 is 2. Right. Check. Everyone understood what are irrational numbers? Now my question is, root 4 is 2. So this becomes rational. Now my question is, can the sum of two irrational numbers be a rational number? Virat is saying no, Siddharth is saying yes. Okay. Can the sum of two irrational numbers be rational number? Actually, it can be. And how it can be? One irrational number is 2 plus root 3. Second irrational number is 2 minus root 3. If you add both the numbers, the sum comes out to be 4. So sum of two irrational numbers can be a rational number. This is an important. Make sense? Can the ratio of two irrational number be a rational number? मतलब A is a irrational number, B is also irrational number, A by B rational number हो सकता है? B is also irrational. Can A by B a rational number? हो सकता है. क्यों हो सकता है? Because let's say A is 2 root 3, B is root 3. root 3 कट गया बचा तो. Make sense? ठीक. नाउ रैशनल नंबर्स को हम जब जनरली बात करते हैं तो हम हमेशा रेशियो के टर्म में बात करते हैं. वी ऑलवेज टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो दैट इट इज पी बाय क्यू, राइट? In terms of decimal, rational numbers are the numbers that either terminates or recurs. That either terminates or recurs. Recur का मतलब ये होता है कि बार बार रिपीट कर रहा है. Recurring means it is consistently repeating itself. So, for example, if I'm going to see that 2.11111, so it is what kind of number? It is a rational number or irrational number? या rational number होगा या irrational number होगा? It is going to be a rational number because it is recurring. Repeat कर रहा है. 4.7. It is a rational number or irrational number? It is again a rational number, right? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 0.5555, इट्स a rational number or irrational? It is a rational number, right? So ये rational number है. ठीक. अगर rational number है तो ये p by q फॉर्म में होगा. What is the p by q form of 0.55555? अब इसका rational फॉर्मेट तो कुछ तो बनेगा. Because the definition of rational number is it can be represented in the format of p by q. Virat, if you calculate that value, that is going to be 0.0005, I think. So, इसको निकालते कैसे? How we are going to convert this? ठीक है.
लेट्स अज्यूम दिस नंबर इज x. इसको क्या अज्यूम करना है? x अज्यूम करना है. हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? कितनी डिजिट है जो बार बार आएगी? एक डिजिट, दैट इज 5. ठीक. नाउ इफ वन डिजिट इज रिपीटिंग, मल्टीप्लाई इट बाई 10. एक डिजिट रिपीट कर रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 5.5, 5, 5, 5 एंड सो. राइट. अब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो. सो सब्ट्रैक्ट दिस. सो डेसिमल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, दोनों का डेसिमल पार्ट तो एग्जैक्ट सेम है. सो डेसिमल पार्ट तो कैंसिल हो गया. So I am going to get 9x and that's equal to what? 5. So x comes out to be what? 5 upon 9. सिंपल. सो एक डिजिट रिपीट कर रही है, सो 10 से मल्टीप्लाई करना है. दो डिजिट रिपीट कर रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. तीन डिजिट रिपीट कर रही है सो 1000 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? 0.23, 23, 23 and so on. Now this is a rational number. अगर rational number है तो p by q फॉर्म है. p by q फॉर्म है तो इसका p by q फॉर्म क्या होगा? ओके खुशी. Consider this as x. How many digits are repeating? दो digit. If two digits are repeating, then multiply it by what? This is going to be 23.232323 and so on. चल रहा है. ठीक. वेरी नाइस सिद्धार्थ. अब डेसिमल पार्ट दोनों का सेम है तो डेसिमल डेसिमल कट गया. I am going to get what? 99x and that's equal to what? 23. So x की वैल्यू क्या आ गई? 23 by 99. अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके. 0.224224. It is a rational number. What is the p by q form of this number? Very nice, Siddharth. Very nice, Ritik. Very nice, Virat. So x comes out to be this. So how many digits are repeating? Three digits. So I am going to talk about 1000x and that's equal to 224.224 and so on. Subtract it, I'm going to get 999x and that's equal to decimal decimal cancels out. So I'm going to get 224. So x comes out to be 224 divided by 9. Check. Now my question is 0.99999 and 1. Which number is greater among the two? Between the two, which number is greater?
दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? Both numbers are equal because if you see x is equal to 0.999 and so on. So one digit is repeating. So 10x is equal to 0.999 and so on. If you subtract, so 9x is equal to 9. So x becomes 1. So this is actually equal to 1. This is also equal to 1. So both numbers are equal. None of the numbers are greater. Understood? ठीक है, आगे चलते हैं अब. So basically everyone knows what are even numbers, what are odd numbers. So tell me, 4, it's a even or odd? 4 is even. Very nice. 3, 3 is odd. 7, 7 is odd. 14, 14 is even. Okay. 2.6, odd. Okay. 4.7, 0. So let me tell you, 4 is even, 3 is odd, 7 is odd, 14 is even, 0 is even, and these numbers are neither even nor odds because decimal में है ये. Fraction and decimals can never be even or odd. The complete numbers, the natural numbers, or I would say the integers, they are even or odd. लेकिन decimals कभी भी even और odd नहीं होते. So, ये बात ध्यान रखने वाली है. ठीक है. The easiest concept, there is one extremely easy concept that I think that everyone knows, लेकिन no one uses this while solving a question. So if I'm going to say that even plus even, ये क्या होता है? That's even, right? Even plus odd क्या होता है? That's odd. Odd plus even क्या होता है? That's odd. And odd plus odd क्या होता है? That's even. Instead of plus, I can say plus minus as well. Even into even क्या होगा? That's going to be even. Even into odd क्या होगा? That's again going to be even. Odd into even क्या होगा? That is again going to be even. And odd into odd क्या होगा? That is going to be odd. So basically ये चीज ध्यान देनी है कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है इवन और ऑड वाला, ये चीज आपको ध्यान देनी है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर डायरेक्टली आ जाता है. ये इसलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई थिंक. ये पता सबको है, लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं इसको क्वेश्चंस में. ठीक है. नाउ लेट मी कम टू प्राइम नंबर्स. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. ठीक है, वेरी नाइस विराट. कि इट हैज
exactly two positive factors, one in itself. Exactly two positive factors, one and itself. ठीक. क्या ये बोल सकते हैं क्या वन एक प्राइम नंबर है? इज वन अ प्राइम नंबर? नहीं है. क्यों नहीं है? one is not a prime number by definition. And why by definition? Because definition कहती है कि दो फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन वन का तो एक ही फैक्टर है. कौन? वन खुद. इसलिए वन कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर. ठीक. नाउ टू इज स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर. वन टू इज स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करेंगे कि दो स्मॉलेस्ट और ओनली इवन प्राइम नंबर है? इसका कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा अपना? हम्म. आप इसको किस तरीके से समझोगे इस स्टेटमेंट को? इसको समझने का जो तरीका है कि दो स्मॉलेस्ट और ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये है कि दो से छोटा जो भी नंबर है वो प्राइम नहीं हो सकता. दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दो से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर होगा वो इवन नहीं होगा, वो हमेशा ऑड होगा. सो वेन एवर अ क्वेश्चन सेज दैट p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन 7, इसका मतलब p अगर एक प्राइम नंबर है 7 से बड़ा है तो वो इवन तो नहीं होगा, तो वो हमेशा क्या होगा? ऑड. ये हमेशा सोचने वाली बात है कि अगर दो से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर है तो वो हमेशा ही ऑड होगा. उसको ऑड लेके कंसीडर करना है. आई होप आई एम क्लियर हियर. पक्का? ठीक. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. क्या आएगा? ए और बी दोनों ऑड नंबर है और सी इवन है. कौन सा ट्रू हो सकता है? ठीक. ए प्लस बी, तो ए ऑड है, बी भी क्या है? ऑड है. एंड दैट इज इक्वल टू सी. क्या ये हो सकता है? सी इवन नंबर है. हो सकता है. एंड आई एम लुकिंग फॉर व्हाट? एक्सेप्ट. सो गलत हो गया. ए इज व्हाट? ए इज ऑड. ठीक है. सी इज व्हाट? इवन. ए क्या है? ऑड. बी क्या है? ऑड. एल एच एस क्या है? इवन. आर एच एस क्या है? इवन. क्या ये हो सकता है? शायद. ठीक है. हटा दो. बी इंटू सी इज इक्वल टू ए. बी क्या है? ऑड. सी क्या है? इवन. ए क्या है? ऑड. ऑड इंटू इवन क्या ऑड के बराबर हो सकता है? नहीं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट दिस? क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, ना कभी होगा. बात समझ में आई सबको? अगला ऑप्शन क्या हमें चेक करना चाहिए या नहीं? हाँ. अगला ऑप्शन क्या हमें चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
सो वी शुडंट चेक द लास्ट ऑप्शन एंड व्हाई नॉट, बिकॉज चार में से एक ही तो सही होगा। वो एक सही मिल गया तो अगला ऑप्शन हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? अच्छा, नाउ अगर हम बात करें इसकी कि गिनती सबको आती है, राइट? सो 1, 2, 3, 4, 5, आई एम राइटिंग ऑल द नंबर्स टिल 99। एक से लेकर 99 तक मैंने सारे नंबर लिख दिए। तो एक कितनी बार लिखा होगा? एक से लेके 99 तक सारे नंबर लिख दिए, तो एक कितनी बार लिखा होगा? इफ यू आर गोइंग टू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, एक कितनी बार लिखेंगे? ओके भावना, ओके विराट, ओके ऋतिक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सारे नंबर लिख लेते हैं जिनमें एक आ रहा है। सो एक, फिर क्या 10, फिर क्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नाउ वी हैव 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। ठीक है। सो वन, 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 वन एंड वन। सो यूनिट प्लेस पे तो 10 बार आ गया। टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। सो 10 बार यूनिट पे आ गया, 10 बार टेंस पे आ गया, तो टोटल कितनी बार आया? 20 बार। सो एक कितनी बार आएगा? 20 बार। दो कितनी बार आएगा? दो भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, क्योंकि दो का भी अरेंजमेंट सेम ही होगा, राइट? तीन कितनी बार आएगा? तीन भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। सो एक से लेकर 99 तक सारी डिजिट्स 20 बार आती है। सारी डिजिट्स कितनी बार आती है? 20 बार। ठीक है, यूनिट और टाइम्स दोनों को मिला के। अब इस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? सो जो सारे नंबर्स हैं उसमें मैं 1 से 99 की जगह इस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। इन एनी 100 कंसेक्यूटिव नंबर्स, किसी भी 100 लगातार आप नंबर्स को उठा लो और उनकी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को देखो, किन्हीं भी 100 नंबर्स को, कहीं से कहीं तक हमेशा एक 20 बार ही आएगा, दो 20 बार ही आएगा, तीन 20 बार ही आएगा, सारी डिजिट्स 20 बार आएगी। ठीक है। अगर मुझे इस पे क्वेश्चन पूछना होगा, सो विच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क? आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन that I am writing all the numbers from 212, 212, 213, 214, 215, 216, and it goes up to 500 and let's say 41। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां से लेके यहां तक सारे नंबर मैंने लगातार लिखे हैं। हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू गेट 8? 8 कितनी बार?
ओके सिद्धार्थ, टेक योर टाइम, 2 मिनट लो, सोचो, गेट द आंसर। ओके भावना। भावना, आई थिंक यू आर क्लोज, बट आई डोंट थिंक द आंसर इज करेक्ट। एक बार थोड़ा सा वापस से चेक कर लो। ओके खुशी। ओके पूजा। ओके ऋतिक। ओके ऋतिक, ये तो थोड़ा ज्यादा है। ओके विराट। अच्छा, तो विच स्टेटमेंट आई मेड जस्ट नाउ? आई हैव मेड अ स्टेटमेंट कि कोई भी 100 लगातार नंबर आप लिखो, उन 100 लगातार नंबर पे आपकी हर डिजिट 20 बार आएगी। हाँ या ना? ठीक है। सो आई एम गोइंग टू नॉट लाइक दिस, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 212 से लेके 311 तक 100 नंबर है। उसके बाद 312 से 411 तक फिर से 100 नंबर है। 412 से 511 तक फिर से 100 नंबर है। ठीक है। यहाँ पे एक 8 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। यहाँ पे कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। यहाँ पे कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। अब अपना काम ये है कि 512 से लेके 541 तक कितनी बार 8 आएगा, ये हमें देखना है। ठीक। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 512 के बाद एक तो आएगा 518 पे, 5 दिस, then I am going to have it at 528, then I am going to have it at 538, और 548 का मतलब इस रेंज के आगे निकल गए, तो 20 + 20 + 20 मतलब 60, +1 + 2 + 3 कितना आएगा टोटल? 63 टाइम्स। अंडरस्टूड? सो किन्हीं भी 100 कंसेक्यूटिव नंबर में जो अपनी कोई भी डिजिट आती है वो आती है अपनी टोटल 20 टाइम्स। कोई भी डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। कितनी बार आएगी? 20 बार। अगर हम यूनिट और टेंस को काउंट कर रहे हैं, अब हंड्रेड्स प्लेस पे क्या वो आ सकता है? डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस 2 है, यहाँ पे 100 प्लेस 3 है, यहाँ पे 100 प्लेस 4 है। सो बेसिकली 100 प्लेस तो आ नहीं रहा है, तो यूनिट और टेंस को मिला के तो 20 बार आएगा। अब 20 बार आएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आएगा? 20 बार। यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आएगा? 20 बार। यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आएगा? 20 बार। इसके बाद हमें मैनुअली काउंट करना है। 512 से 541 तक मैनुअली लिख लो कितनी बार आ रहा है। तो इसका मतलब 518, 528, 538 कितनी बार? 3 बार। और सो 60 + 3, आंसर कम्स आउट टू बी 63। समझ आई सबको ये बात? कैसे करना है? हाँ या ना? ओके। 300, 393 से मैंने नंबर लिखने शुरू किए। 393, 394,
395 से लेके 600 एंड लेट्स से 9 तक कितनी बार तीन आएगा? 393, 394, 395, 396 एंड सो ऑन, 609 तक कितनी बार तीन आएगा? ओके भावना। ओके खुशी। फिर तक। अच्छा देख, शुरू करते हैं। रिमेंबर दिस द स्टेटमेंट्स आई हैव मेड। 393 से 492 कितने नंबर? 100 नंबर। कितनी बार तीन? 20 बार। 493 से 592 तीन कितनी बार? 20 बार। ठीक। अब उसके बाद 593 से 609 तक। एक तो 593 में आएगा, एक 603 में आएगा, तो मतलब 2 बार और। ठीक। ये जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग अपनी यूनिट और टेंस को मिला के है, राइट। लेकिन हंड्रेड्स प्लेस पे भी तो आएगा। हंड्रेड्स प्लेस वाले तो हमने काउंट ही नहीं किए। 393 में हमने ये वाला काउंट किया है, लेकिन ये वाला काउंट नहीं किया है। सो 393, 394, 395, 396, 397, 398 एंड 399। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सात और आएंगे। जो हंड्रेड्स प्लेस के हैं वो अभी तक हमने काउंट नहीं किए हैं। सो बेसिकली इन एनी कंसेक्यूटिव 100 नंबर्स, every digit appears 20 times in unit and tens place। हंड्रेड्स प्लेस का तो अलग ही काउंटिंग होगा। अंडरस्टूड? सबको ये बात समझ में आई? तो वो जो मैनुअल काउंटिंग है वो आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी हंड्रेड्स प्लेस के लिए। क्लियर? किसी को कोई डाउट इस कंसेप्ट में? So basically it is a start. Hopefully when you are going to learn more, you are going to be a little bit more comfortable with these kind of concepts. And anyhow, we are going to discuss each of these basic concepts in detail in the ongoing classes. So with this, I'll wind up today's session. If anyone has any doubt or you want to ask me anything, you can ask me any question. I would be happy to respond. Thank you. Hmm.
तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। कि Himanshu, next session we are going to have very soon. I don't have exact date for it, but sorry, Siddharth. So basically, we don't have exact date for it, but we are going to have next session very soon. Don't worry about it. Uh, so, and I think everyone else is going to convey that to you. I think Pratik is here or Himanshu is here. They will respond to that. विराट बेसिकली अगर 4 डिजिट में ऐसा कभी केस आया नहीं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। क्योंकि अगर 4 डिजिट वाले में आएगा, सो वी हैव टू टेक डिफरेंट अप्रोच, एंटायरली डिफरेंट अप्रोच। सो 4 डिजिट वाले के लिए थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उसमें हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस को भी कंसीडर करना पड़ता है। सो उसमें थोड़ा सा वो देखना पड़ता है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ विराट, कि 100 से लेके 199 तक अपने पास टोटल 100 नंबर्स हैं। इन 100 नंबर्स में एक कितनी बार आएगा? तो इन 100 नंबर्स में एक 20 बार नहीं आएगा, एक आएगा 120 टाइम्स। एंड वाई सो? बिकॉज 100 से 199, सो 100 से 199 तक 100 नंबर्स होते हैं, राइट। 100 नंबर्स अगर होंगे तो यूनिट और टेंस को काउंट करके 20 बार आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस विराट? लेकिन हंड्रेड्स प्लेस पे, सारे हंड्रेड्स प्लेस पे वन तो आ रहा है, क्योंकि 100 से 199 है, तो हर हंड्रेड्स प्लेस पे 100 नंबर है और हर नंबर में वन आ रहा है, तो 100 बार हंड्रेड्स प्लेस के वन मिलेंगे। सो 100 से लेके 199 तक 120 टाइम्स वन आएगा। दैट इज गोइंग टू इंक्लूड योर हंड्रेड्स प्लेसेस। मेक सेंस? सो जब हम बड़े नंबर्स पे जाते हैं, सो वी स्टार्ट कंसीडरिंग दीज थिंग्स एज वेल। सो अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि 1 से लेके 999 तक एक कितनी बार आएगा, सो बेसिकली माय आंसर इज गोइंग टू बी 200। 200 क्यों? क्योंकि 100 100 100 100 नंबर के 10 वो बनेंगे अपने। सो 1 से 99, 100 से 199, 200 से 299, सो ऐसे 100 100 नंबर्स के 10 ब्लॉक बनेंगे। एंड एवरी ब्लॉक इज गोइंग टू हैव 20 टाइम्स यूनिट एंड टेंस प्लेस ऑफ वन। तो 200 बार हो गया। प्लस 100 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके हंड्रेड्स प्लेस पे वन आ रहा होगा। तो 1 से लेके 999 तक एक 20 बार नहीं आता है, 200 बार आता है। ठीक है, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस भी काउंट होगा। सॉरी, 200 नहीं, 300 बार आएगा। सॉरी सॉरी, दैट वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक फ्रॉम माय एंड। आई होप आई मेक सेंस विराट, राइट? किसी को और कुछ पूछना है? Okay, so with this, we'll wind up this session. Take care, bye bye, and all the best. And I hope to see you again soon.